So in any circuit, there are energy sources. Sometimes it is a voltage source, sometimes it is current source. So in order to explain the current source and voltage source, we take one circuit diagram. Which circuit diagram? Circuit is based on a transistor. I think everyone know the transistor. This is a transistor circuit, NPN transistor circuit. In case of the common emitter, this one is a common emitter circuit. This is C collector end, this is E emitter end, and here it is the base end. And here it is the output. This point is VO output, or this point is V in input. So base, collector, or emitter, and here it is the grounded. So in this simple circuit, if you want to plot the equivalent circuit, so the equivalent circuit of this transistor is given as in this way. This is the impedance. Here it is a source, and then there is a this is collector, here it is emitter, and this is base, and this is your emitter. This line is emitter. This line is emitter. So this part is input. This is input, and this part is output. This part is output. So here in output or input, there are two types of symbols. This symbol represent voltage source. Voltage source. And this symbol represent current source. Current source. So in a given circuit, there are energy sources, and these energy sources are termed as voltage sources and current sources. So we have to differentiate what is the voltage source and what is the current source. Now, in any circuit, when we have this kind of the symbol, then this symbol is V voltage of DC, because this is a positive terminal and this is the negative terminal. This point is A and this point is B. Or we can have this type of symbol and we can have one wave. So this is VAC symbol. This is A terminal and this is B terminal. So this is the first one is DC source, and second one is the AC source. And the voltage across the source is constant. Suppose we have this kind of the axis, x-axis and y-axis, and this x-axis represent the current source, current from source, current from the source I, and this is the voltage. So this voltage is V source voltage, which is constant, voltage. Now, ideally, the voltage source has zero impedance. The first point is circuit symbol, second point is graph, and third point is
जीरो इम्पीडेंस, जीरो इम्पीडेंस, सोर्स का इम्पीडेंस जीरो होगा। लेकिन ये जो सोर्स का इम्पीडेंस जीरो होगा, ये आइडियल कंडीशन है। ऐसा कोई सोर्स नहीं होगा जिसका इम्पीडेंस जीरो होगा। तो रियल यदि सोर्स है तो उसका जेड का मान कुछ न कुछ फाइनाइट होगा। वी कैन कॉल इट जेड सोर्स। तो जेड सोर्स के रूप में यदि हम बात करें तो कोई सेल है, जैसे पहला सर्किट है, पहले सर्किट में अब थोड़ा मॉडिफाई होगा। अब ये एक इम्पीडेंस हो गया, फिर ये आपका सोर्स हो गया। तो ये जेड सोर्स और दिस इज प्लस, दिस इज माइनस वीडीसी। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। डीसी के लिए, एसी के लिए भी हम इस तरह के इम्पीडेंस दे देंगे, और ये सोर्स हो गया, एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज ए। तो इसको भी जेड एस कर देंगे, सोर्स इम्पीडेंस, और ये वी एसी हो जाएगा, एसी सोर्स। अब यदि ऐसा हो रहा है तो अंतर क्या आएगा? अंतर जो वी है, आई करंट फ्लो करेगा एक्स एक्सिस पर, और यहाँ का करंट वी होगा वाई एक्सिस पर। तो जो हमने कहा ये आइडियल डॉटेड लाइन से, वो रियल केस में थोड़ा इस तरह से होगा। मतलब करंट यदि बढ़ा, आई एस है ना, आई एस यदि करंट आया तो उसका वोल्टेज थोड़ा ना थोड़ा डाउन होगा ही होगा। तो ये हो गया वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स में आइडियल इंपिडेंस जीरो है, दिस इज जेड एस इज जीरो, लेकिन रियल सोर्स का कुछ ना कुछ इंपिडेंस होगा, वो है जेड एस। तो दिस वन इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और जो आउटपुट होगा वोल्टेज, दिस आउटपुट वोल्टेज इज वी सोर्स वोल्टेज माइनस आई लोड इंटू जेड एस। तो जेड एस के क्रॉस जो ड्रॉप होगा, ये इसमें से करंट फ्लो होगा, दिस इज द करंट फ्लो, ये आई एल होगा लोड करंट। जैसे ही करंट फ्लो होगा वैसे ही इसमें एक पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, आई एल जेड एस के क्रॉस जो ड्रॉप होगा, उसके बाद ये वी जीरो मिलेगा। वी जीरो कहाँ मिलेगा? V0 विल बी ऑब्टेन अक्रॉस ए बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर ये आपको मिलेगा। तो वोल्टेज ये जो ये दिस इज VO। तो VO इज हियर एंड दिस इज द VS, सोर्स वोल्टेज। तो सोर्स वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में ये एक अंतर हो जाता है। कुछ जगहों पर हम इसका नाम बदल देते हैं। VS is sometimes known as EMF, electromotive force, and V0 is potential drop across the source. So this discussion is for the voltage source. Now in case of current, the current source symbolically represent as something like this. This is IS, and this part is here, and the impedance ZS impedance is infinity. ZS impedance is infinity, and this is terminal A and this is terminal B. So this one is the ideal condition. This is ideal condition first. So what is the graph? Graph of this is, graph can be drawn as this is terminal voltage VAB, and this current is IS. IS current is there, so this current is fixed. This current is fixed. So this part is the source, current source with infinite Z infinite,
and in case the current is constant. But in real circuit, in real source, ZS is not infinite. ZS is not infinite. So what will be happen? Now the current source can be drawn as this is your ZS. Here it is IS and ZS. So there is some finite current. So this current is flow across. So part of current is flowing through ZS. And therefore, the graph is something like this is AB terminal. This terminal is A and this terminal is V. Voltage AB terminal. Earlier, this was the IS, which is constant. This is the y-axis current. So this is the real current. That is, by increase of this voltage, there is decrease in the current. And for the circuit component, for the circuit component, we can have, this is current source, and here this source is ZS source impedance, and then there is some output load. So its value is ZL. This is A point, this is B point. The load is attached to this point. So this current is divided in two parts. Here it is I load current and IS. So this current, the source current that is flowing in this way is IL. This load current is equation IL ZL is equal to this voltage is equal to IS minus IL into ZS. So what we find, IL, if you take common, so here it is ZL plus this is ZS is equal to IS into ZS. IS into ZS. So what IL is, this IL is equal to IS ZS divided by ZL plus ZS. So this is the current expression. This is the current expression. You can have this one is as this is IS divided by 1 plus ZL by ZS. 1 plus ZL by ZS. So if ZS is infinity, this ZS tends to infinity. So what IL is equal to IS. This will deduce from this equation. This is deduced from this equation in this pattern. So what we find in case of this transistor circuit, we use both. This is the voltage source as input part and current source in output part. So what we find in this case, the current and the voltage, here this part, Z source is tending to infinity, high. And this ZS voltage source tending to zero. So what we find here, it is low impedance, and this is high impedance. And therefore, if you have a little bit idea about the biasing, then this one is a forward bias, which is low impedance, and this is reverse bias,
a high impedance in case of active region. So this one is example. You will have several concept of this transistor, and this concept is divided here. It is two part as the voltage source and current source. Voltage source and current source. So the basic concept of the voltage source and current source is here. And now these voltage source and current source can be used in the discussion of theorem, network theorem. So today I like to have the network theorem. This is the network theorem. So there are four basically network theorems. The first theorem is known as very important Thevenin's theorems. Thevenin's theorem. First theorem is Thevenin's theorem. So what do you mean by Thevenin's theorem? इनके जो concept है वो बहुत important है. Concept बहुत important कहने का मतलब है कि इसका जो statement है वो statement थोड़ा लंबा है. तो आपको गूगल क्लास पे यदि इसको सबमिट करना है तो गूगल क्लास पे या रफ पे आप प्रैक्टिस करिएगा लिख के कम से कम 10 बार स्टेटमेंट, नेटवर्क थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा उसको हम लिख रहे हैं. एनी सोर्स and any source and impedance, any source and impedances between two terminals of network can be replaced by an equivalent current consisting of voltage source. Voltage source is VT with an impedance ZT. The voltage source is the open circuit voltage. The open circuit voltage and impedance is the impedance of network measured
measured between the terminals, with all the energy sources replaced by their internal impedances. सर ये तो सुपरपोजिशन थ्योरम है ना? ये सुपरपोजिशन नहीं है, इंटरनल सुपरपोजिशन दूसरा है, वो मैचिंग आता है। इंटरनल इम्पीडेंसेस। अब देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले इसकी जरूरत समझ ली जाए तब जाकर। मान लीजिए आपके पास कोई चिप है ना, सपोज यू हैव ए चिप। कौन सी चिप? ये आईसी चिप है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे सर्किट्स आपके बने हैं। किसी पर्टिकुलर टर्मिनल पर आपके सर्किट में प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ। अब इस पर्टिकुलर टर्मिनल के प्रॉब्लम्स में कितना एलिमेंट है, कहाँ खराब है, इस चीज को डिटेक्ट करना है। तो इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए अब हम हर पॉइंट पर नहीं जाएंगे, बल्कि इस पूरे सर्किट को हम एक को इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफर करेंगे। क्या है इक्विवेलेंट सर्किट? तो द complicated circuit can be represented by the a circuit consisting of T network। मतलब क्या होगा कि उस सर्किट को हम टी नेटवर्क की सर्किट में रिप्लेस कर देंगे। ये तो ये क्या होगा, दिस इज Z1, दिस इज Z2 एंड दिस इज Z3। ये एक टी नेटवर्क हो गया। अब इस टी नेटवर्क में एक हो जाएगा ये आउटपुट, दैट इज लोड, और दूसरा हो जाएगा दिस इज ए सोर्स, ये दिस इज ए सोर्स। तो V सोर्स, Z सोर्स और ये Z1, ये इस तरह का आपका एक सर्किट बन गया। और इस सर्किट को अब आप रिप्लेस करते हैं थेवेनिन सर्किट में, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के स्टेटमेंट को जरा फिर से पढ़ा जा। एनी सोर्स एंड इम्पीडेंस बिटवीन टू terminal of a network can be replaced by an equivalent current consisting of voltage source VT and an impedance ZT। ठीक है, तो कोई भी पार्ट है, अब इसको हम रिप्लेस किससे करेंगे? ये एक सोर्स हो जाएगा और एक इम्पीडेंस हो जाएगा, दिस इम्पीडेंस इज ZT। थेवेनिन का VT is the source and this one is the impedance, है ना। the voltage source is the open circuit, ये open circuit हो गया, this point is open circuit, and impedance is impedance of the network measured between the terminals with all the energy sources replaced by their internal impedances। तो यहां से ये जो पॉइंट है, this is the open point, से A point and B point जिस पे लोड लगा है, जिस पे लोड, ये ZL is the load attached with this point A and B। तो AB के पहले
ये जो इम्पीडेंस है, सारे इम्पीडेंस को हम कंबाइन करेंगे और वो कह देंगे दैट इज जेड टी। जेड टी एक इम्पीडेंस हो, ठीक है। और जेड एल के एक लोड रेजिस्टेंस, लोड इम्पीडेंस जो पहले से चला आ रहा। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट ये है टी नेटवर्क का, इसमें दो लूप है, 1 और 2। अब इस दो लूप से हम करंट की एक्सप्रेशन को निकालना चाहते हैं। करंट की एक्सप्रेशन निकालने के लिए मान लीजिए ये लूप 1 में जो करंट है वो I1 है, और लूप 2 में जो करंट है ये है IL, लोड करंट है, लोड करंट है। तो अब यहां पर सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया जाए तो क्या होगा, दिस करंट I1 फ्लो थ्रू द ZS, Z1 and Z3. तो दिस वोल्टेज ड्रॉप इज I1 into ZS plus Z1 plus Z3 माइनस। सर ये आइडियल सिचुएशन नहीं होगा? हाँ, आइडियल सिचुएशन, कौन सा आइडियल सिचुएशन? इम्पीडेंस ड्रॉप पे। नहीं, अब ये तो हम एक सर्किट की बात कर रहे हैं ना, तो रियल सर्किट है, तो रियल सर्किट में आइडियल की बात क्यों करेंगे? आइडियल कंसेप्ट तो हम लेते हैं फिजिक्स डेवलप करने के लिए कि ये होगा, लेकिन रियल जब सर्किट आएगा तो रियल सर्किट में डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो ये I1 करंट फ्लो हुआ ZS, Z1 और Z3 में, और दूसरा करंट IL, ये IL करंट कैसे होगा, इस तरह से फ्लो होगा, किसमें, Z3 में। तो I1 के अपोजिट IL है, तो दिस इज IL लोड and this one is Z3 is equal to यहां से जब चलेंगे तो यहां क्या आएगा, V सोर्स आ गया, दिस इज VS, दिस सोर्स इज VS। और दूसरा करंट इसमें फ्लो होगा, इसमें क्या होगा, माइनस I3 Z3 प्लस IL कहां फ्लो होगा, Z2 ZL प्लस ZS, और इसमें क्या है, वोल्टेज 0।